So you would file the small claims case at the Nassau County Small Claims Court. I know you said it was at Nassau, just because that's where the business is registered. And in the email, we provided information if you want to do like file a small claims case for how to do that and like where you would do that and the form that you would fill out when you go or if you choose to go and file the claim. Okay. So yeah, so it's everything's there. If you need any help with like what to do about like the lost or damaged items, where to go, or like if you need help like filling out the form, let us know and we can like send over some more information. But yeah, if you do want to file a claim against Network Trucking, then I think all the stuff is there, and let us know if we can like help with anything else. Oh, okay. So I would have to, okay, maybe find a way to get there. Okay. Nassau County. And, okay, I'll take care, I'll read the email. And, I have your number. And, yeah. And, you guys, I'm going to have to do everything myself. Yeah. You guys, there to support me. Yeah, we because we're not like law students or lawyers, and we're like just in college. Yeah. We can provide legal information that's just available to the public, but we can't like help you fill out stuff or like tell you what to do. Just like give you the information that you can find on the website, but Okay. in a way that makes sense. Because I know that like a lot of the court websites are really confusing. So yeah. Or can come to the court like a lawyer. Oh no, we can't come to the court. No. Yeah, yeah. Okay. Yeah, got it. Well, I really appreciate it for your help, Yeah, of course. showing me the Also, just to way. clarify, Yeah. the small claims, like the court website says that because small claims court is like it's smaller court, you don't need a lawyer. You go and you would explain, like if you want to go, you would go and explain your situation to whoever is like the judge or the arbiter. So you don't. I don't think you need a lawyer. It would just be like it's less like stakes, I guess. Got it. Got it. Mhm. Yeah, I would. I made a video, so I think I would have to go. I don't know how can I show the judge video. I'm honestly not sure, but I think if the case is in person, then I think you can just show the video in person. Oh, okay. Yeah. I do have a pictures. I can just show the pictures and also the video. Yeah. Yeah. So yeah, I think the way that the small claims like when they listen to the case is structured so that you have 10 minutes to show any evidence that you want. And you'll definitely have the opportunity to do that if you want to go to the court. Yeah, yeah. Yeah, I'll write everything down and yeah, before I go. Awesome. Yeah. So in the email, like it's like we said, we listed out, like where the business is registered, like what information you need to file, and then also the form where you would, if you want to go to small claims court, like file all that stuff. But yeah, let us know if you have any questions. You can either reply on the email or text me, and I can respond. But yeah, just wanted to make sure that you had that information. Okay. And yeah, I'll just but do I have like I have to do it right away, everything as soon as possible? No. You don't have to. You don't have to do it right away. You can Okay. do it whenever you want. But yeah. Yeah, because not having a good job, and plus, I am getting sick, because also plus, the my wife she got psychosis, so it's hard for me. I got to take care of her,
and no place, no place to stay, and we going to the like fast food place to brush our teeth, and you know staying in the car, getting very sick now, Oh, and I'm so then sorry to hear that. yeah, and the food and everything is not, because eating outside, and we lost everything. So yeah, outside food is. I was just getting a stomachache today Oh, because the dinners change. Sometimes last week, because the Uber Eats food delivery, they didn't give us any work, and the all night, and they just only gave us a one delivery, and it was like a $12.69, and they log us out, and I couldn't log in and work, so we had to stay hungry for the dinner. Then the next day, and we didn't have money, so we didn't bought the dinner in the morning. We didn't bought breakfast. We didn't bought lunch. And then when the money little bit it came, I had to borrow some money from somebody to for the gas. And then we put a little bit of gas and we worked and we transferred the money to the bank account. And then we bought breakfast in a dinner time. oh, Yeah, so our routine, everything has been changed, so we're getting like very sick. yeah, yeah. Did you say something about like your cousin? Like, is there someone you can stay with, or? No, no, no. My cousin lives really far, but Oh, okay. he Okay. bought me a car, so he said that maybe you can work with Uber Eats and get a place to stay, and that's what he said. He says maybe you can come up and work your way up, and try to find a place to stay. But Uber Eats didn't give us a lot of hours, and they say it's not busy, and they log us out. It's not a high demand, and we have to keep on trying. And yeah, but I noticed that I don't know why Uber is doing this to us, because a lot of guys on a bicycle and scooter, they're getting so many orders. One of the guy on the scooter told me that he was making a 1,500, 1,700 a week. Wow. And do the people? I've seen a bunch of people on bikes. Do they? Is that through Uber Eats, or is there like a different service? Yeah, Uber Eats, food delivery, and they also do like a Grubhub, DoorDash. Huh. Yeah, and Is that on their own bike, or like? I'm just curious. Like, is it different if you're doing it by bike versus by car? Because I know even like Uber Eats. Like, I've had someone like drop. I've heard of like people dropping off food when they're like walking. But yeah, but the walking, they don't give you really far, and you can make a lot of money, and yeah, they okay. will log out right away, because yeah, you need like if you put like 5 6 miles, and then you get more orders. But if you put like less than 1 mile, yeah, you have to wait like so long, and there's now orders that go on like 5 blocks or 6 blocks. But there's orders that go on like really far, most of the orders. So that's why it's better to have a vehicle. uh, Okay. and like all these scooters and bikes, they go, take the red lights, they go to like bicycle lane, they take the bus lane. So whoever does it fast, they giving all the orders to the because they made a app like that, that Yeah. whoever is the fastest, they give all the orders to them. Okay. Okay. Yeah, Um. Okay. so it's for hard for the cars to get orders. Yeah, Yeah. because we're stuck in the traffic, and we can't drive too fast. Yeah. And especially because there's like the speeding cameras now. That's like tough. Yeah, and and I can speed because car is not registered and doesn't have insurance. And so we did get a like a pullover by cops, but we saw the cops my wife's hospital papers, Yeah. and our Vixen papers, and they saw us that we are like really in a bad situation.
So they told us that try to fix everything. Yeah. Yeah, and thanks to you guys, you're helping us. Yeah. I mean, so do you think you're gonna keep like doing Uber by car or like by like bike or scooter? I'm just curious if like, yeah, No, or no. because I was just doing that because the doctor told me that I have to watch her. Okay. Yeah, I have to watch Anoli, and because he has psychosis, so she Yeah. sits in the car with me. Yeah. She's like in her baby world, like her mind is like 5 years old girl. Yeah. So hospital they screwed us, Metropolitan Hospital, because they trying to make a money from the insurance company, Hmm. and they didn't let us see the social worker, and also because her insurance company told me that make sure I sign the papers that I could make a decision, but they don't let me make a sign of papers, so I can't make a decision for her. Sweet. Oh my gosh. Yeah. So yeah, and then my landlord got me sick because the rent we were paying was 1,300, but he wanted a 2,600 because my neighbors everybody paying 2,600. Yeah. Yeah, so it just really tough time for us. Yeah, for me. But we pray God. We pray God every day, and we used to pray for everybody, and we used to help people who help the city, and Yeah. God send us. God send the angels to help everybody, and God send the angels to create jobs. And because we are connected with the universe and we are spiritual, Yeah. and and the marshals didn't help us, the judge didn't help us, HRA didn't help us, and we kept going back and forth. And at least at the last, after year and a half, the HRA wanted to help us, but then he says the landlord, bring the receipt from the landlord. If he say, give him the rent, we need the receipt for the last rent. But the landlord didn't take the receipt because he want us, you know, get us out of the house. And his lawyer says, do not take the money. And yeah, he didn't give us a receipt, and we couldn't show that to the HRA, so the HRA didn't make the past payments. Okay. So that's why we got evicted, and Marshals didn't help us, the judge. And now the only way, we are like paying gods and stuff, and this, whatever they're doing to us, God is really, really mad at them. Yeah. If okay. And That just sounds so hard. yeah, and I notified that to the Marsas. I says, it's not our fault. We got very sick with the mildew. I lost my memory. I showed them the pictures and everything. What the landlord, and I didn't fix, and I have to keep on cleaning, and I have to take care Noli, and it's too much work for me. Uber Eats not giving me work. We keep going out and one restaurant to another. They gave us like a 1, 2 orders and log us out, and they're giving all the orders to bicycle and scooters, and they only give us 5 hours. I sold it to HRN. I sold it to everybody, and just now finally, told the Uber last month, you guys not doing the right thing, and God is really mad, and they make us my hours 10 hours a week, week now, Oh my and gosh. now I'm only making it $200 a week. But then sometimes they pay me like 45, $50 a day, and then 15, $20 goes in the gas, and then Yeah. $20 is food, and I'm left with nothing. Yeah. And last week, and we pray, and so we got a job and working for the Con Edison, putting the cones and a spotter, for the Con Edison when they need to dig the place. And yeah, but they pay $10 an hour. Oh. Yeah, but at least I could do it with work with my wife Noli, and while she's sleeping and staying in a car. But Yeah. then they're doing the wrong thing. The this company,
that works for, the kind of listen they take a contract, and they're giving us all this work. They're doing the wrong thing. Not paying us minimum wage. They're paying us below minimum wage. Hmm. Yeah, and I couldn't even work right now. I had to take a nap because I had a stomach ache because, yeah, not getting enough food and sleep and shower. So, you know, and staying in the car, got very sick, and yeah. And right now, when you call me, I just woke up now. Yeah, I just took like an hour nap because I got sick. But God is very upset. I notified that to Marshals, because I says, a lot of people, jobs. God is not going to create jobs no more because we are, getting treated really bad, and people going to, lose jobs. And I even told them last time I went to the Marshals, because even a network company stole our stuff. And even I had a brand new cabinet, $500 cabinet. I forgot to tell you, it was in the box, like a closet, cabinet. And it was in the box, and also that one is missing. And they only gave us like messed up stuff and broken stuff, and our stuff. They broke it. Yeah, and Yeah. I told that to the Marshals, and remember, guys, I told you a lot of people gonna lose jobs, and economy is not gonna. Everybody's gonna, the housing market would, will crash, or, and look, 52,000 people lost their jobs, and I told them, and also a couple days ago, 13,000 people lost their jobs Mhm. because Um, we were the one that praying for everybody to for the jobs. We used to work with the God and create jobs for the everyone. yeah. Okay. So Yeah, I mean, this, like, I know this is like an insanely hard situation. Um, um, and just I wanted to just say again that, like, based on like all of the stuff that you said that you lost in like our first call, like the bed, your chain, everything else, the yeah, drawers for the bed. dining If table. you Yeah, sue, or if you choose to like do a small claims suit in Nassau County, the maximum money, or the maximum amount of money that you could sue for would be $5,000, and it sounds like that's like the amount of stuff that you lost is like $5,000 or more. So if that's something that you would want to do, um, I think it sounds like you could sue for $5,000. But yeah. okay. And also because the network company, they said that, oh, we're not gonna give you anything. You have to sign it first in order for us to load the truck. And they didn't let me see anything. They didn't let me go inside the warehouse. So I mean, they made me sign some papers there. I received my stuff. So Did you sign the papers or not yet? yeah, I signed the papers because they made me, because they said that they're not gonna let me take the stuff. Yeah. Okay. They're not gonna load the truck unless I sign it. Yeah. Yeah. Okay. Well, I'm pretty sure that that's something also you could talk about, like at the like court hearing, like when like you like, or if you like would go and show like your video as well, or whatever you had said before. But yeah. So if we can be of any more help, or if you have any updates on like the small claim suit, just feel free to text us, or just text me, or respond to the email so that we both can respond, because it's me and Abra working on the case. Okay. But yeah, so just let us know with any updates. We'll check in probably in a week or two. But yeah, thanks for making the time to call. Sorry to wake you up from your nap as well. No, that's fine. This was an important phone call. All right. Yeah, and I want to thank you guys for being there when nobody's there for us. And you know what the psychic says? The psychic says, that you always help people. You always was there for everybody, but when you needed help, nobody's there for you.
And you could ask psychics, and if you don't believe me, like everything I have told you, and that we used to pray for people, and to bring the jobs for everybody, the psychic will tell you everything. Because even like I opened up a YouTube, and one of the videos came up, and I never watched the psychic videos, and I don't even know how these psychics they know about me. The psychics on the YouTube, and it was the fresh video. They just made a video, and it came up in front of me, and they knows about our story, and they tell me everything, and everything was true. So I think the psychics, they have some kind of psychic powers. They have a spiritual powers. Well, if you can ask them, and they will tell you everything about my life, because we are vegan, and we care for animals, and you know but I had some of the psychics told me before, years ago, a long time ago, that you give out all your ideas, and you teach people like meditation, yogas, like you have give all your ideas, but don't give out all your ideas, but you have to look into yourself, what's in it for you, you know and yeah. Yeah. Okay. Yeah. Well, we definitely think there are people willing to help. We're glad you reached out, and just make sure to keep checking your email. We'll send some more Sure. resources over if we find anything that we think could be helpful for you. But yeah, we wish you the best. Like if you need anything with the small claims court, or like need some help, feel free to contact us. We can try our best. Yeah. Sure, sure. And thank you for taking your time out to call me, and email me all this information. And what is your, like, do you have any wish? Any what? Sorry. Any wish that you prefer? What do you have, any wish? We just hope the best for you. We just want to make sure everything, hope that it all goes well. Do you want any special job, or something in the life? No worries. No worries. Yeah. It's okay. Because because the God sends the angels for us, and we work with angels, and we create the worlds, and whatever we want, and they do it, so we could make your wish come true. Yeah. Sorry, this is Abra. Jack just had to step out for a second. Okay, Abra, thank you very much for your help. But yeah, no, I agree. I think there's people that are looking out for you. We'll look into it a little bit more. We'll look for any job equity groups that we can get you connected with, maybe, or any food pantries or anything. But yeah, it'll be okay. Just I don't know. Do your best with the small claims thing if you choose to. But I'm really sorry about your situation. Yeah, no worries, it's not your fault. Yeah, and yeah, it's just the hospitals are greedy to make money from the insurance company, and and the landlord is greedy to make money, because his house is paid off, and he's still greedy. His parents gave him his house, and he was still greedy. So that's why the economy is not going up right now. That's why economy is black, because people are just greedy, and they are, and because we are spiritual, and we don't do harm anybody, or we don't want to do wrong for anybody. That's why the God and the angels are there for us. Yeah. Yes, and that's why the creation has been stopped. That's why everything blockage. The jobs has been blocked. Everything's blocked right now. Yeah, because the HRA didn't help us. Even unemployment.
I just went to unemployment. I was applying since February, and last week I just went to unemployment, and they told me that fine. I went to their office because they're not responding to the phones, and they said, you know, you never made 3,500, more than 3,500, because the requirements for you to get, to unemployment, you have to make 3,500, a week. To So even receive unemployment benefits. yeah, to receive unemployment benefit, that's why we cannot give you any unemployment benefit because you did not make more than 3,500 a week. Wow, that's really interesting. That's so strange that they said that. Yeah, and they said that Sorry about that. yeah, it's not your fault. So, you know, they said that we send you letter, mail, but I said we don't live there no more. We got evicted. But yeah, I cannot get the mail, so that's why they told me over the phone. And we were at the workforce one, and it's hard for me to get a better job because my wife, she has a psychosis, Noli, and taking care of her is just hard, and the hospital didn't care. They only give us her 1 week medication, but her doctor told her that she needs a 6 months of medication for her to get better. Yeah, and the Metropolitan Hospital, it's all African American people there. So, sometimes they were so rude. They didn't let me give her food, even if I was like, you know, on time because they close at 7:59 p.m. And they gave her medication on empty stomach, and yeah. So they didn't give her food. They will give her chips and give her medication on chips. So it's just like I've been a really hard life, I've been through. So that's why the economy is blocked and it's not going nowhere. Yeah, Yeah, I'm yeah. sorry to hear that. But people who are really good and always help me, and God and the angels are always helping them and protecting them. Yeah, So definitely. yeah, and I wanted to ask you a question. Sure. Yeah, you know what is you guys want to become in life? In life, well, we're both freshmen in college. Okay, So I don't really know yet. I think I'm gonna go to law school, but I'm not sure. okay, I don't know about Jack. okay, Probably the same for Jack. But okay. So are you guys dating each other? no, Oh, okay. no, Well, we're not. okay, okay, cool. No, I was just curious, because um so Yeah, you say you want to go to law school, right? yeah. Okay. But we're gonna work on that email for you. With some additional resources. But I hope you have a good rest of your day. Sure. And same for your wife. But we'll talk to you later, okay? Yeah, sure. And Deborah, and I'm gonna be praying, just sending your prayers to the God, and God's gonna send the angels to Thank you. help I'll you. keep you in my prayers too. Thank you so Yeah, much. so it's gonna help you with the law school that you want to go to, and everything will be accomplished, and it will show you the way, and all the process, everything will be easy, and whatever your wish is gonna come true, and even a more wishes, all the other wishes, and we're gonna do this prayer tomorrow. We're gonna send the prayers, and we're gonna connect with the outer universe. Okay, from the other. Well, thank you so much, Nolan. Have a good night. Yeah, yeah, and we'll be in touch. Okay, thanks very much for your time and your help. Definitely. Yeah, So much. and good luck with your study and everything. Thank you. Thank you so much. Have a great night. Bye. ओके गाइस, सो लाइफ में सब ने हमें धोखा दिया है। तो वर्ल्ड में कैसे अच्छे लोग हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं, गोरे अमेरिकन लोग, आप देख रहे हैं जैक एंड डेबरा।
ये दोनों मुझे हेल्प कर रहे हैं हमारे एंड ये लोग क्या कर रहे हैं कि यू नो अपना कर्मा बना रहे हैं, अच्छा कर्मा कर रहे हैं, गुड कर्मा बना रहे हैं। तो ये जो गुड कर्मा है ना, तो लाइफ में इनको हेल्प करता है। तो जो अमेरिकन गोरे लोग हैं ना, तो ये लोग फ्री में मदद करते हैं, वॉलंटियर वर्क। तो इनके पास फ्री टाइम होता है ना, तो ये लोग हैंग आउट नहीं करते, पार्टियां नहीं करते हैं गोरे लोग, गलत लोगों की दोस्तियां नहीं करते हैं। तभी तो ये लोग इतने बिजनेसमैन हैं, आगे हैं, अच्छे हैं, सब कुछ अकम्प्लिश करते हैं। अब हमारी एनर्जी डेबरा को भेजेगा एंड जैक को, इनको मदद करेंगे। ये लोग दोनों हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो इकानमी तो ब्लॉक कर दी है हमने, तभी तो अभी मुझे ट्रम्प का भी वीडियो बनाना है। एंड ऑल्सो ये जो ट्रम्प तड़प रहा है, अमेरिका तड़प रहा है, टैरिफ डाल रहा है इनकी इकानमी बचाने के लिए, एंड क्या 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 कर रहा है, राइट। एंड जो इंडिया में इनका साथ नहीं देते हैं, वो कई लोग खाली स्टूडेंट्स, ये सब वॉलंटियर वर्क करते हैं। एंड ऐसे लोगों को और भी कॉल आए थे, लेकिन हमने फिर कहा कि ऑलरेडी ये लोग हमें मदद कर रहे हैं, सिटी वाले हैं। तो एक ट्रम्प है ना, एंड पॉलिटिशियंस, ये सब लोग अभी ये लोग बड़े तड़प रहे हैं। इनको पता नहीं इनकी इकानमी को क्या हो रहा है, वो है ना। तो साइकिकों से इनके पास तो बड़े बड़े साइकिक हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े, एंड CIA एंड इनके, तो इनको है ना, तो बड़ी मदद करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं। एंड ऑल्सो इन साइकिक को इन्होंने है ना, तो मेरे बारे में बताया होगा, क्योंकि मुझे भी ड्रीम में आया था कि मुझे है ना, तो एक ब्लॉक मेरे दूर, जैसे कि इतनी SUV है ना, एक SUV खड़ी है, इतने दूर FBI वाले थे, और दूसरी तरफ लेकिन मेरे पीछे थे, एंड मुझे वॉच कर रहे थे, तो मुझे देख रहे थे। एंड ये मुझे ड्रीम में आया था, ये सच था। एंड सब कुछ ये है ना, तो मेरा फ़ोन भी इन लोगों ने क्या कहते हैं इसको, दे जैक माई फ़ोन, एंड सब कुछ लेकिन ये तो कुछ नहीं कर सकते, एंड मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने है ना, तो किसी को हर्ट नहीं किया है, मैंने है ना, तो कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है, तो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते वो, क्योंकि मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, हमारी भगवान की शक्तियाँ कर रही है, सब भगवान की शक्तियाँ यूनिवर्स चला रही है। तो हमारे पास भगवान है, शिव शक्तियाँ हैं, तो शिव शक्तियाँ हमें मदद कर रही है। तो ये लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं कि इकानमी फिक्स करने का, एंड कीप ऑन रोलिंग। एंड हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि इनको मदद करने के लिए हमने ही उनको बोला है कि इकानमी भाड़ में जाए इन सब का, क्योंकि सब सेल्फिश हैं, इनके लोगों को ही मदद करते हैं। एंड इनको लोगों को ही जॉबें देते हैं अच्छी अच्छी। एंड मुझे इतने मैंने सारा किया है, तो मुझे किसी ने हेल्प नहीं की है, लेकिन प्रभु ने मुझे मैसेज भेजा कि तुम्हारे लिए एक क्राउन है, कि तुम्हारे लिए प्रभु ने प्लान बनाया है। ऐसा मैसेज आया था मुझे कि प्रभु ने तुम्हारे लिए प्लान बनाया है, तुम्हारे लिए क्राउन रखा है तुम्हारे लिए। तो हमने कुछ अच्छा किया होगा लाइफ में। आप प्रभु के लिए जिएंगे, इन वर्ल्ड इनके लिए काम करेंगे, क्रिएट करेंगे ना, तो दुनिया भी ख़त्म कर डालते हैं। इन गाइस, ये जो वीडियोज़ मुझे अपलोड करने हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हो गए हैं, इन सब अपलोड करने हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन क्विक दिखा देता हूँ मैं। गुरु माई फोन फोरो खाना रेसिंग की अभी जॉब कर रहे हैं, गाड़ी के ऐसे खून रखने हैं, गाड़ी में बैठना है, देखिए सब। एंड $10 पे आवर हमें पे करें। फर्स्ट स्टोरी ये है हमारा फ़ोटो एल्बम, आपको दिखा देते हैं, देखिए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा कैबिनेट, ये जो कंप्यूटर, ये जो माइक्रोवेव टेबल था, यहाँ पे ऊपर का है ना, सारा इज़ मिसिंग अ पार्ट। हमें सारा सामान यूहुल ट्रक रेंट करके करना पड़ा। अल्लाह राम, हमारा इतना बजे, मेरा बैंक अकाउंट इतना ही पैसा है, और इतने पैसे में हमें ट्रक रेंट करना पड़ा, माइनस बैंक अकाउंट हो गया, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पैसा ट्राई किया हमारा सारा सामान। एंड हमने एक स्टोरेज में से लेके दूसरे स्टोरेज में डाला ये सब सामान।
इन आधा आधा सामान इन्होंने ले लिया सब कुछ। ये हाउसिंग लॉटरी, ये देखिए हमें अप्लाई करना है, इसलिए मैंने कहा ये हाउसिंग लॉटरी है ना, तो लोगों को लग्जरी में यहाँ पे घर देते हैं, तो वो हम अप्लाई कर रहे हैं। एंड सनी साइड क्वींस, हम जहाँ पे रहते हैं, तो ये जगह पे हमें अप्लाई करना है क्योंकि $500 इज गुड, स्टार्ट्स एट 500। सो ये सब हाउसिंग मार्केट ये सब है ना, तो लग्जरी हमने क्रिएट किया था, तो इसलिए हमें ये लोग दे रहे हैं गरीबों को। ये जो मुझे यूल का ट्रक मिला वो इसका चाबी था 26 नंबर का मिला। मेरा बर्थडे 26 है, 26 + 26 हम हैं 52। ये मैक्सिकन के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस सनी देव ने मेरे पीछे पड़े थे, 4 दिन से एक्सीडेंट करवा दिया मेरा सनी देव। ये मैक्सिकन ने मेरे कज़न से पैसे लेके इसको दिल दाना पड़ा, क्योंकि सनी देव ने मेरा तो जीना हराम कर दिया 4 दिन। एंड हमें कंगाल कर दिया सनी देव ने। अभी हमें इतने तकलीफ़ में हैं, तो अभी इन्होंने कुछ मदद नहीं की। सनी देव ने मदद करनी चाहिए, इसके जगह हम लॉगिन नहीं कर पाए ऊबर ईट में, आप देखें। एंड इतना ही पैसा हम एक वीक में इतना बनाया, ये सब चला गया था। एक वीक में गैस एंड फूड में ही चला गया, ये खाने के लिए, भोजन के लिए। तो अभी हम ये जैक एंड देब्रा वो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो प्रभु ऐसे अच्छे लोगों को ही हेल्प करेंगे जो वॉलंटियर काम करते हैं फ्री में, तो ये वर्ल्ड हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे। ये जैक एंड देब्रा जैसे लोग हैं, इनके लिए ही इंडिया में भी अब किसी को मदद नहीं हो रही है। अब इंडिया में भी भगवान ने मदद करना बंद कर दिया, लेकिन हिंदुओं को जागना पड़ेगा, इनको अवेकनिंग करना पड़ेगा। पैसे के भूखे नहीं, पैसे के लालचू, ये सब खत्म हो रहे हैं, पैसों के लालचू। मेरे लैंडलॉर्ड, कोर्ट वाले, चारे वाले, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ इन यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन्होंने सब ने हमारे जीना हराम कर दिया। सब भगवान ख़त्म करें, तो पैसे के लालचू सब बंद हो। पैसे की लालच नहीं करनी है हमें, रिलीजन नहीं बेचना है। यूट्यूब पे सब रिलीजन, भगवान की शक्तियाँ, सब कुछ भगवान को भी बेच डालते हैं। इनको अब नहीं करना है ऐसा, नहीं तो वो भगवान नहीं मदद करेंगे। अब शैतानों क्या कर रहे हैं वो देखिए आप। क्लाउड्स बस हो रहे हैं, स्टॉर्म आ रहा है, वेदर फ्लड वगैरह हो रहा है। ये हम स्टॉप कर सकते हैं, मुझे पता है कौन कर रहा है, मैं स्टॉप कर सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि हमारे साथ जुड़ो। ये है ना, तो सीएल, सुरक्षित सीएल हम भिजवाएगा। इस सुरक्षित सीएल है ना, मैं भेजना है। ये है ना, तो शैतानों भेज रहे हैं सब कुछ, राइट। शैतानों ख़त्म कर देंगे, इनका चाल वगैरह सब कुछ है। इन सब शैतानों को मुझे ब्लॉक करना है, जो पहले मैंने किया था इनको ब्लॉक वगैरह। मैंने पहले बताया था कि यूरो, राइट, ब्रिटिश को, फ्रेंच को, सबको बैंकरप्ट कर दिया, राइट। हमने पुतिन को शक्ति भी भेजी, राइट। एंड हमारे पुतिन के साथ जुड़ने की वजह है ना, तो जो यूरोप है इनको भगवान को बेच दिया, शक्तियाँ बेच दी। क्योंकि वो लोग आएंगे, वो कहते हैं कि इंडिया भारत के साथ इतनी पॉजिटिव क्यों एनर्जी है, ये लोग क्यों टूट नहीं रहे हैं, राइट। हाई इन्फ्लेशन क्यों नहीं हो रही है, तो मैंने हाई इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट किया था, ये भगवान की शक्ति भेजी थी। अब इन लोगों ने ही जाके भगवान को बेच दिया, रिलीजन बेच दिया। एंड ये लोग है ना, स्वीट बन के आते हैं, तो इनकी चाल में फंस गए हिंदुओं। एंड क्या क्या इन लोगों के दोस्तों बन के, ये लोग स्वीट बन के इनका सीक्रेट सब निकाल लेते हैं। जो प्रेयर्स वगैरह सब कुछ भगवान का बेच दिया ना, तभी इनको है ना, तो इनका सब कुछ गुड लक चला गया। एंड यूरोप के पास चला गया, इन लोगों के पास चला गया। एंड जब भगवान दर्शन देते हैं तो किसी को बताते नहीं है। एंड भगवान का प्रेयर्स वगैरह सब कुछ इन शैतानों को बेच दिया। तो अब इसका इन लोगों को हाई इन्फ्लेशन जरूर महसूस होगा, इनको सफरिंग होगी भारत को, इसीलिए तो मैंने बोला था हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि स्ट्रैटेजी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी ऐसी आपको बना के रखनी थी कि स्ट्रिक्ट कोई भी आएगा, हमारा रिलीजन नहीं बेचेंगे, हमारा जो भी जितना ट्राई करें, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ने भी, इन्होंने एग्जांपल दिया था कि हमें किसी से कुछ निकलवाना है तो हम क्या करते हैं, इनको बोलते हैं कि चलो ड्रिंक करने चले, वाडका पिला देते हैं, राइट। जिसको ड्रंक कर देते हैं तो इनका सारा सीक्रेट निकाल लेते हैं। लेकिन हिंदुओं को ड्रंक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेवकूफ़ इतने लोग हैं कि इनको हैं तो स्वीट शीट बोलते हैं, तो इनको हाय हेलो एंड स्वीट बना के इनको बच्चे बन जाते हैं।
तो इनका बाप जो है सब कुछ निकालवा, ये जो शैतानों हैं, गुरा लोग हैं, सब कुछ निकालवा लेते हैं इनसे। इन्हें सब लोग बढ़ देते हैं, सब कुछ बांट देते हैं, सब कुछ अपना भक्ति शक्ति रिलीजन। अभी मंदिर में भी मुझे प्रेयर नहीं करने दे रहे, फ़ोन लेके घूम रहे हैं। इनको ऊर्जा भगवान की मिल ही नहीं रही है, मुझे भी प्रेयर नहीं करने देते हैं। मेरा टाइम एंड शक्ति भी ये लोग वेस्ट कर रहे हैं। मुझे भगवान की शक्ति ऊर्जा वो लोग नहीं आने दे रहे हैं। अभी भगवान मुझे संकेत भेज रहे हैं, इतना ही बनाना है वीडियो, तो हम चलता है, काम पे जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये इंडियन लोग हमारे गुरुजी ने बताया था कि सॉरी टू से जो है वो है, इसको हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन सच बोलना चाहिए। तो हम सच बोलते हैं कि सारे हिंदुओं से ऐसा नहीं लें, क्योंकि इंडियन लोग है ना, तो वर्ल्ड के घटिया में से घटिया लोग हैं। मंदिर में प्रेयर नहीं करते हैं, करने भी नहीं देते हैं। हमें भगवान की एनर्जी भी नहीं लेने देते हैं, ऊर्जा। अब बब्बू मुझे संकेत भेज रहे हैं कि बस अब नई बात करनी है, तो हम निकलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड और भी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा मैं। यानी मंदिर के भी मुझे वीडियो अपलोड करने हैं, मैं ट्राई करूंगा मैं कल एंड ये सब वीडियो अपलोड करने का ट्राई करेंगे। सो होपफुली ये सब लोगों के पास जा सके। एंड दोबारा सब लोगों को कोई वीडियो मेरे वॉच नहीं कर रहा है, जुड़ने है भारत, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। एंड तभी शक्तियाँ भेजेंगे, बबुआ प्रोटेक्शन सीएल भेजेंगे। एंड प्रभु मदद करेंगे, सब कुछ, सब चीज़ों को देंगे, सब कुछ देंगे। रिचेस्ट कंट्री एंड जो भी आपकी इच्छा है आगे लाएंगे इंडिया को। सोने की चिड़िया दोबारा बना सकते हैं, लेकिन ये लोगों के पास कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, शैतानों को, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, गलत रास्ते पे भेज रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी हमारी स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी है, इनके चक्कर में नहीं पड़ने का, इनके ट्रैप में नहीं पड़ने का। आपकी स्ट्रैटेजी है कि इनसे दूर रहो, बातें बनना मत करो। एंड रसिया का साथ दो, हमारा साथ दो, हमारे साथ जुड़ो, रसिया के साथ जुड़ो। अभी हमें इतना ही करना है, ये मैंने सब कुछ बता दिया था पहले। तो अभी 2022 से हमने शक्तियाँ भेजी थी, 2024 में बंद कर दिया। तभी इंडिया में आप देखें कितना तकलीफें आ रही है, लोगों की खुशियाँ चली गई, हाई इन्फ्लेशन हो गया, बख्तियाँ। पाकिस्तान को मोदी जी ने जाके अपना सब गुड लक बांट दिया हनुमान जयंती पे। हनुमान इनको प्रेयर करा, इनका रिलीजन अलग है, हमें अपना ध्यान देना है। तो ऐसे बहुत कुछ मोदी जी ने किया है बहुत बार। एंड मैंने बोला था कि जाके इस शैतानों देशों के है ना, तो नेटो के हैंड नहीं से करना है। इनके हैंड से किया तो इंडियन आर्मी का ट्रक गिर गया पहाड़ी से कश्मीर में। फिर दूसरी बार ऐसा किया तो हेलीकॉप्टर गिर गया, मैंने मना किया तो भी। फिर इसने जेलेंस्की का, मैंने कहा कि जेलेंस्की का हाथ मत से कीजिएगा, ये तो बहुत बड़ा शैतान है। इनका हैंड से किया ना, इनका मदर मर गए, इनकी मदर चले गए। तो बैड लक होता है ये सब। मैंने मना कर रहा था, तो अभी ये मोदी जी है ना, तो अब मैंने कहा कि पाकिस्तान जाके हनुमान जयंती मत बनाइए ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान प्रभु हनुमान इनको सजा देंगे, राइट, प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट। हमारा सब गुड लक चला जाएगा, राइट। तो भारत का गुड लक चला गया, पाकिस्तान का हाई इन्फ्लेशन लेके आ गया। इन हनुमान जी ने पाकिस्तान में अर्थक्वेक दे दिया, अर्थक्वेक आया पाकिस्तान में, और रिश्ते बिगड़े ना। नहीं करना था, मत करो। मैंने बोला ये सब, कोई मेरा वीडियो भी वॉच नहीं कर रहा है, तो ये सब दोबारा बताना पड़ रहा है, और सब वीडियो में बताना पड़ेगा। इन सब मेरा टाइम, मेरा गला दुखता है। हमारे साथ जुड़े। एंड गुरा का कैसा स्ट्रैटेजी है, हमें भी ऐसा ही अपना स्ट्रैटेजी अपनाइए। एंड इनका रिलीजन अलग है, हमारा रिलीजन अलग है। तो हमारा रिलीजन ये जूस लोगों के साथ से सीखे। अभी इनका रिलीजन कभी बेचते नहीं है, इनके मंदिर में किसी को घुसने भी नहीं देते, इन किसी को जूस बन भी नहीं सकते हैं। कहते हैं कि इनके जो रिलीजन में है, बर्थ लेना पड़ता है, फ्रॉम बर्थ आपको जूस होना पड़ता है जूस बनने के लिए। तो ऐसा बने, तभी प्रभु हमारी शक्तियाँ भेजेंगे, प्रभु आपको भी शक्तिशाली बनाएंगे, वॉरियर बनाएंगे। हमारा जैसा प्रभु आपके लिए सब क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अमेरिका में मेरे लिए वीगन रेस्टोरेंट बना रहे प्रभु, सब कुछ वीगन। ये देखिए, प्रभु ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया, प्रभु आपके लिए करेंगे। फिर ऐसा ही आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए,
यू नो। तो ये स्ट्रैटेजी बनाइए और अपनाइए, इन शैतानों को साथ छोड़े, नहीं तो आपको सफरिंग करना पड़ेगा। इन लोगों को कैंसर हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब कुछ इंडिया में भी सबको होगा। सोने की चिड़िया नहीं बना पाएंगे। इसलिए कहता हूँ मैंने हर बार कि हमारे साथ जुड़ो, एंड प्रभु के साथ जुड़े। और चलिए, मुझे प्रभु ने बोला था ना इतना ही वीडियो बनाना है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम जूस रिलीजन के बारे में बताएंगे। लेकिन देखिए मुझे कोई आके ब्लॉक कर दिया, इसलिए मुझे यहाँ पे है ना तो हटना है, एंड काम पे जाना है, तब हमारा टाइम हो गया है। सो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम। जो जुड़े हुए हैं, फिर हमें इनको शक्तियाँ भेजनी है, प्रोटेक्शन भेजना है, शक्तिशाली बनाना है मुझे।